Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई और MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ये ऑल सेट करदेव तापर वीडियोज क्लारिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज PDF नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए विषय रे पढिबा ऑलरेडी हमें देखिला about the transpose and the adjoint of a matrix. So गोटे matrix रा inverse केमती बाहर करिबा suppose we consider an n square matrix capital A. Now if there exists another n square matrix capital B such that AB यदि हमें matrix multiplication करूछु this was found out to be equal to BA माने उल्टी गला and it is equal to IN that is n square unit matrix, then B will be called as the inverse of A and A is called the invertible matrix माने ए मैट्रिक्स को हमें इनवर्स करि परिबा ओके सो याको डिनोट करिबा हमें बाय सिंबल A इनवर्स ओके ए टू द पावर -1 ए हिसाब रे सो गोटे थ्योरम देखो एवरी इनवर्टिबल मैट्रिक्स पोजेसेस एन यूनिक इनवर्स सो याकू केमती प्रूव करिबा देखो we consider any n square matrix capital A which is invertible and let B and C be the two matrices which are the inverses of A okay now if the matrix A has a unique inverse माने B must be equal to C दुईटा inverse रही परिबो नाही okay so since B is the inverse of A we must have AB equal to BA which is equal to IN. Similarly C madhya A ro inverse so AC equal to CA equal to IN. Now equation 1 रे एबे हमें यदि C multiply करूछु ताले CIN which is equal to C. Equation 2 रे एबे हमें देखो एठी CA ए जो अछि एठी हमें B multiply कला राइट साइड रे so IN into B which is equal to B right okay now এই जो इक्वेशन दुईटा एटा और एटा एठी देखो LHS समान अछि ओके सिंस CAB equal to CAB which is equal to CAB therefore compare जदि करिबा इक्वेशन 3 और 4 को then B must be equal to C so very easily हमें देखि पाइला it follows that every invertible matrix A possesses a unique inverse right तापर next theorem the necessary and sufficient condition for a square matrix A to possess an inverse is that it is non-singular माने यार determinant must be non-zero okay गोटे square matrix पाई let us prove it suppose हमें गोटे matrix नेला square matrix A जार inverse होची B then by definition again AB equal to BA equal to I okay now from equation 1 जदि हमें determinant बाहर करिबा AB should be equal to I or determinant A into determinant B should be equal to the determinant I which is equal to 1 अच्छा now determinant A and determinant B यार multiplication हमें देखिला जे एटा निहाती भाव नॉन जीरो ही आसुची कॉन्सिक्वेंटली जदि नॉन जीरो आसिला द डिटरमिनेंट A मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो दैट इज इट मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर वन ओके दस द नेसेसरी कंडीशन टा एटा हमें फर्स्ट बाहर कला फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स टू पोजेस एन इनवर्स इज दैट इट्स डिटरमिनेंट मस्ट बी non-singular or its determinant must be not equal to 0 that is the matrix must be non-singular right now we have here a sufficient condition we have now to prove the condition to be sufficient also for which let us assume that the matrix A
is any non-singular matrix, that is एबे उल्टा जिनस करिबा यार डिटरमिनेंट को हमें नॉट इक्वल टू 0 कहबा ओके देन वी हैव सिंपली टू प्रूव दैट इनवर्स ऑफ ए एक्जिस्ट करूची ओके सो लेट अस डिफाइन अ मैट्रिक्स बी such that b equal to adjoint a by its determinant ओके सो जेहेतु एटी डिटरमिनेंट एटा नॉन जीरो देइछु एटा एटी देखो डिनोमिनेटर रे अछि सो above equation can be now written like this ए बी आम जदि दुई साइड रे ए मल्टीप्लाय करदेला ओके सो एठी ए मल्टीप्लाय हैला एबे एठी न्यूमरेटर लक्ष्य कर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यार वैल्यू हुए डिटरमिनेंट इंटू द यूनिट मैट्रिक्स जोटा आम प्रूव करथिला थ्योरम 2.1 रे प्रीवियस क्लास रे ओके ताले डिटरमिनेंट तळे ऊपर अछि कैंसिल हे गेला ए बी रो वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू आई ओके ऑल्सो सिमिलरली आम बी ए रो वैल्यू जदि बाहर करबा एटा भी आई आसीबो और ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई then the matrix B must be the inverse of A or the matrix A is invertible thus आमे एटाकू sufficient condition मध्य prove करला thus the necessary and sufficient condition for a square matrix A to possess an inverse is that the matrix must be non-singular that is its determinant must be not equal to 0 या सहित गोटे कोरोलरी भी अच्छी if a matrix is invertible then the inverse of A is defined as A inverse equal to adjoint of the matrix divided by its determinant ओके या को हमें बहुत यूज करिबा प्रॉब्लम सॉल्विंग रे ओके जो थरे कि गोटे मैट्रिक्स देथिबो तारो इनवर्स बाहर करिबा को कहि थाए ओके नाउ ए कोरोलरी यदि हमें देखिबा इट गिव्स rather a powerful method of computing the inverse of a square matrix जेमति कहली now coming to the next theorem 2.4 if A and B are two n square non-singular matrices then AB A transpose A dagger are all invertible and AB inverse एबे एटा को प्रूव करिवार अछि ओके AB inverse should be equal to B inverse A inverse similarly A transpose inverse should be equal to A inverse transpose and A dagger inverse should be equal to A inverse dagger okay so यार proof यदि हमें देखिबा as per the problem A and B are non-singular therefore determinant must be non-zero so that the determinant AB should be equal to also not 0 okay this implies that AB is a non-singular matrix and hence invertible okay अच्छा now transpose यदि बाहर करिबा मैं ई मैट्रिक्स रो आ तारो डिटरमिनेंट नबा we know that it should be equal to the determinant itself because here determinant is not equal to 0 so A transpose will also be invertible also A dagger यारो भी determinant यदि बाहर करिबा it must be equal to A star यारो determinant and as the determinant is not equal to 0 so A star determinant which is equal to A dagger determinant not equal to 0 or A dagger is also invertible okay एबे proof part को जिबा so first आमे inverse बाहर करिबा ई मैट्रिक्स रो दुईटा so A inverse और B inverse यदि inverse हे गला ताले A inverse which is equal to A inverse A must be equal to I similarly B inverse equal to B inverse B equal to I now consider another matrix C such that C equal to B inverse A inverse then CAB एबे C रो वैल्यू हमें लगेला आपको ठीक है सॉल्व करिबा जदी यार वैल्यू देखो फाइनली आसीबो इक्वल टू I ओके since A inverse A equal to I and IB equal to B या को हमें अप्लाई करिछु ओके ताले हमें पाउछु कोन B inverse A inverse into AB equal to I similarly it can be shown that AB into B inverse A inverse equal to I so ए जो दुईटा इक्वेशन हमें पाउछु equation 1a and equation 1b from these two equation we are getting that B inverse A inverse
is nothing but the inverse of AB, or this quantity is nothing but AB ର whole inverse. Okay, ଗୋଟେ remark ଏଠି ଅଛି, this result may be extended to any number of square matrices which are conformable for multiplication. Okay, suppose for example, for three matrices A, B, C, we have ABC whole inverse equal to ଏବେ ଓଲଟି ଯିବ ତାର order C inverse, B inverse, A inverse, right? Similarly, now replacing B by X, okay, এটা তিনটা ডিটারমিনেন্ট, তিনটা ম্যাট্রিক্স ପାଇଁ এটাକୁ সলভ କରୁଛୁ ଆମେ. So replacing B by X in equation 2, we have এটি I think ମୋତେ ଲାଗୁଛି B ତ ନୁହଁ, এটা ହେବ BC. Okay, printing mistake ଅଛି. Replacing BC by X, we will have AX whole inverse equal to X inverse A inverse. Okay, so ଏବେ ଯଦି ଆମେ substitute କରୁଛୁ X equal to BC, ତାହେଲେ ABC whole inverse equal to BC inverse A inverse, or C inverse B inverse A inverse, which is hence proved. Okay, number 2, hence for any number of matrices, okay, তিনিটা নুହ ଯେକୌଣସି number ଆମେ matrices ଯଦି ନେଲା ଆଉ whole inverse ଯଦି କରିବା, we will get the result in a similar way. Okay, so ये गला remark. ଏବେ second जोड़ा prove କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, let us now have A inverse, which is equal to A inverse A equal to I, the unit matrix. Now taking transpose of both sides using I transpose equal to I, we have A inverse transpose equal to A inverse A transpose, which is equal to I. Okay, याको एबे separately लिखिदेला हमें by reversal law of transpose. Now from this it follows that A inverse transpose must be the inverse of A transpose. देखिले जଣା पड़ुची. Okay, so A transpose the whole inverse must be equal to A inverse the whole transpose, and hence proved. Number 3, এটা जो dagger कहूतला, so taking the conjugate transpose of both sides of equation 5 जो ऊपर हमें पाइथिला, so A inverse यार conjugate transpose माने dagger नहीं गला, should be equal to A inverse A dagger or equal to I dagger, and this is also equal to एबे आपको हमें distribute कर देला. Okay, A inverse dagger A dagger A dagger A inverse dagger should be equal to now I, because I dagger is nothing but equal to I. Okay, so it shows that A inverse dagger must be the inverse of A dagger, that is A dagger inverse equal to A inverse dagger, and hence proved. Okay, so this is all about the inverse of a matrix. Thank you.